अरे यार क्या हो रहा है ये? चलो ठीक है. You click the right one, and this is your Windows operating system. As same as that. It just server operating system has server manager. ठीक है? Where you have the option to add role and features, and then adding the role and features. For our lab installation, we installed Active Directory domain services. Active Directory here. There are hundreds of other roles and servers. You can install IIS, you can install DSCP, you can install WTS, you can install WPROs, and as such many roles you have over here in order to manage those clients. Yeah, as of now, don't get confused. It's just the server operating systems are designed in order to manage the client operating systems. Be it and if your server operating system is a host server operating system, it can manage other server operating systems as well. Any doubt in the last sentence I just spoken? No, sir. Clear. No, sir. No. While these servers can also be created on-prem with your hardware and with your software units, they can also be created on Azure. It will be like you are accessing the service platform as a service on the cloud. ठीक है? Right, sir. Your hardware and software required for creating this server OS along with the data store and storage, that will all be provided by cloud. It's just you'll have to pay for all those things. So the reason why I'm telling you this can be on-prem or this can be on cloud, because even when MECM is majorly for on-prem services, providing facilitating on-prem services, but now see any server sitting on. These servers are all migrated on Azure cloud. Yeah, cloud पे ही ये server आप बना लेते हैं. Creating servers are very easy on cloud. I believe I have showed you guys. Just right click and you just want to create a server, create server. Type the version you want, type the hardware you want, what RAM, what hard disk. Accordingly, you'll be paid. You'll be paying. Not to confuse. We will discuss that all later when you'll have that understanding to discuss that. Here, let's only discuss we have what we have covered in the previous sessions. In 2 sessions, we can say one was introduction, second was the installation of complete lab, which we did practically. So here, the first thing you would need to have server operating system, right? Now, Right, sir. I have a machine, I have one server operating system installed on it. Now, let's talk about if we are creating the complete IP infrastructure by ourselves. It's not the organization where different servers and different servers owners are there. So for that sake, you will be installing server OS. Then what would be the next thing you would be doing? Active Directory AD. You need to have Active Directory. Okay. So let's say first you had server OS installed, then you had one other server, and you have Active Directory installed on it. It is called Active Directory server. Means on this server, Active Directory. Yeah, and they are being owned by whom? The Active Directory technology folks. Cool. Yes, bhai. Yes, sir. If you say Yes, how it bhai. looks, we installed it. If I show you, bluff में I am just clicking कि maximize यही कहीं होगा और दोनों बार bluff नहीं चल रहा. Where is it? The machine has gone. अरे यार, console कहाँ है?
Oh. So let us suppose if this was the Active Directory server, you can access it using this command. DSA.msc, a direct graphical view, say you would have got Active Directory users and computers. So this is basically, this is like Active Directory of all the of organizations. This is how Active Directory looks like. This is the domain. I told you guys about the domain, .net, .com, .in, everything. Region wise, they create their own domains under forest, and after they create organizational units, groups. Basically, this is not our part, so we'll not be discussing that later. This is how Active Directory looks like, which has the information of all the users and all the computers of your organization. Right. Right. कोई भी Right, sir. Yes, bhai. सिस्टम है, कोई भी एम्प्लॉय है, कोई भी यूजर है, कोई भी कस्टमर है, they will all be in your Active Directory. In the Active Directory of that organization. Be it TCS, HCL, Microsoft, Wipro, anything, all the resources details they have is in the Active Directory server. Right. Right, sir. Yes, sir. So two things, they have all the resources. Secondly, all the authentications are being done in the Active Directory. Okay. Yes. Now, what would be the third thing you'll be doing as a part of prerequisite? Database, sir. Yes. The database, SQL database. Yeah, SQL database. The third thing you will be adding would be Sir, third part is Extend AD AD schema. schema. extend करेंगे. that's fine. Mhm. That's okay. हाँ. Okay. We can write database also. Not an issue. What database? SQL database. SQL database. So we'll be owning it, the SQL folks, the database folks. Why do you need SQL data? For storage. Storage purpose. For storing the information. Like going forward, when you create any application and all the storage will be here. Going forward, when you want to know on how many devices, say on out of 2 lakh devices, on how many devices application is there. So you'll have that data in the database. Right. You'll be putting all data in the database. That's why we need database as a prerequisite, as a part of prerequisite. Now, okay. Now, what would the next thing you'll be doing? Add schema GPU. AD is coming GPU. extension. Yes. What GPUs you gonna create and where? Not Client you. communication के लिए और SQL communication. Client communication and SQL. Client and SQL communication core. AD में बनेगी. Firewall. DP policy. Yes. One would be for client communication, and second would be for SQL communication. SQL communication. what all firewall ports will be opening. 80 and 443. Port 80 and 443. 443 in WMI. internet internet. There was one more. There was one more group policy for the client communication, if you remember. 1433 and 4022. Client. Let's stick with the client first. 5443, and the third one was And WMI. WMI. WMI Yes, sir. port. WMI. Yes, WMI. For SQL, what it is? 1433. 1433 and 4022. 4022. Perfect. This will be the firewall setting. You need to have. I'll put it as number 3. Okay. Now, what will you doing after this? Network. What? Schema extension. AD schema extension. AD schema, SCCM come. Where we would be doing it? In Active Directory. Directories में. We will be extending Active Directory schema. 4 class and 14 attributes. Hmm.
what exactly that those attributes and classes are having? What exactly gets added when we, I'm not talking about specifically you tell me which all classes and which all attributes are there. I just want to understand what is the purpose of extending active directory schema. For Yeah, communication. by To communicate just To for with the use as a effective communication communication language. between the AD and the SCCM. yes, SCCM. Yeah. Yes, because some of the classes or say some of the codes gets of your technology, that is MECM, that gets added and wait, like the coding, like few of the classes and objects which got created, which is a part of MECM, gets added in the coding of Active Directory in order when you say something from MECM server later on, say it will have you will be needing any data from Active Directory. This Active Directory would be able to understand that just because you have added that dictionary in that coding of Active Directory, right? Yes, by. Right. New people, Yes. obviously you will face some issues. What are the discussions are going on? It is because we are doing this high level discussion just for the reason we have like have discussed it in very detail earlier, so that you are comfortable in answering everything. Okay, so now what, okay, we are done with that. Now this thing, now again, what we will be doing as a part of like infrastructure installation. Networks and configuration. Network configuration, okay, that would be done by networks team. Okay, whitelisting and antivirus whitelisting, that will all be done. You tell me what you would need to do. Uh, SCCM download from I. SCCM हम डाउनलोड करेंगे. हम्म, तो इसी तरह सर्वर ओएस भी करना था, सीक्वल भी करना था, एमईसीएम भी करना था, है ना? एडी नहीं करनी थी, बस एडी विल बी द बस एडी उसमें मिल जाएगा. okay. So let's say we will be now installing MECM, yeah, MEM server, SCCM server, MEM, right? Server means MEM application, yeah, MEM technologies, that's a better word. Now, once you will start doing the, like, let's start with the installation. What all things will be happen? It will be checking for all the prerequisites, right? Like Yes, schema by. Right, sir. extended or not, firewall ports are being created or not, uh, where is SQL database, right? These all things will be Right, checked. sir. Few features it will be checking. Thereafter, during the installation of MECM server, you saw what all things will be created. Sorry, by. Could you please repeat the question? MECM जब इंस्टॉल किया था तो क्या क्या चीजें क्रिएट हुई थी ड्यूरिंग द इंस्टॉलेशन आपके भाई वो इंफ्रास्ट्रक्चर? प्राइमरी साइट बनेगी और इसका सर्वर एमपीडीपी हुआ था बनेंगे MPDP. और सीक्वल डेटाबेस शेयर बनेगा और फिर लास्ट में कंसोल. कंसोल बनेगा. एग्जैक्टली, अगर आपने यहाँ पे MECM इंस्टॉल किया है क्योंकि ये पहला सर्वर है तो इट विल बी अ प्राइमरी सर्वर, राइट? Say you have installed primary Right. server in Noida location. This is the head office of the company. ठीक है? And by default, one management point and one distribution point got created. I hope you remember. Yes, sir. Yes, Yes, भाई. sir. Yes, sir. Yes. This is the default one. तो बनेगा ही. Distribution point server and management point server. And if this is your MECM server name. Say I'm using, sometime I'm using MECM, sometime I'm saying MEM, sometime I'm saying SCCM.
consider it as all one. Now we have the latest is MEM. Okay, so this will be your MEM server. MEM server, you have this primary site, which is in Noida. There will be a site code. Yeah, the site code. Yeah, Yes, India. three Three or three. alphabets like See, so we can say if it is in Noida, so we can say NOI. yeah, yeah, NOISH. Just say PR1. It will get better. Good reference. See, this is primary one. Okay, this is site code, 3 character site code. What will be having in the database, if you remember during the installation, how you will gonna find the share of your MEC server in database? Not CM underscore site code, perfect. Underscore site code जो भी होगा basically. PR1 So up to this, we have discussed twice in sessions. We have installed all these things in front of you, like in front of like everyone. We have installed this lab, complete lab, and now we will be going forward to discuss the hierarchy. A few people were answering, few are not. I know the people who were part of like previous sessions, they must be having understanding on all these things. But even now, even then, if we have someone who's not understanding anything, या इसमें से कुछ भी उनको समझ में ना आया हो, they can come forward and ask, other than the new people. There is a doubt. Is that anything जो समझ में ना आया हो, जो हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम? No, sir. No. Have you all gone through the videos? Yes, जी sir. भाई Yes, Has sir. anyone tried installing lab on their own personal lab, personal laptop? No, sir. No, sir, that I didn't. No. But yes, I went through the videos. All right. So I hope now you guys have clarity now. I can confidently say कि हाँ अब पता है Yes, कि sir. हाँ टेक्नोलॉजी हमारी जी इंस्टॉल भाई हुई है, क्या चीजें लगी थी, क्या क्या चीजें बनी थी, क्या चीजें होती हाँ हैं, भाई। और रियल वर्ल्ड की अगर रियल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इसकी मैनेजमेंट क्या होती है. When it comes to Active Directory server, being an L2 plus will not be having access on it. SQL will not be having access on their server. Yeah, they can provide you the level access. Up to that, you can able to view only your share, not the other. हो सकता है बस इतना देख पाऊँ अगर सर्वर की वो एक्सेस दे भी रहे हैं डेटाबेस वाले, क्योंकि वहां से यू विल नीड टू पुल द रिपोर्ट. ठीक है, तो ये है. तो अभी ऐसे मान के चलो, दिस इज नॉट योर सर्वर्स, ऐसे इनके 10 सर्वर्स होंगे, एडी वालों के अपने बहुत सारे होंगे, राइट. हियर यू विल नॉट बी एबल टू एक्सेस. योर एक्सेस पार्ट विल बी दिस. ये आपका सर्वर है और आपके सर्वर से जितने भी सर्वर बनने वाले हैं आपके काम के लिए, लाइक योर मैनेजमेंट पॉइंट, योर डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट, और ऐसे जो भी बनेंगे गोइंग फॉरवर्ड, तो ये सारे सर्वर्स ये आप, ठीक है. जी भाई यू आर ऑफ दीस सर्वर्स, ऐसे ये सब आपके हैं. तो इसमें एडी और एसक्यूएल वालों को नहीं होगा, ऐसे क्लाउड वालों का नहीं होगा, सिट्रिक्स वालों को नहीं होगा, किसी और टीम को नहीं होगा, किसी और टेक्नोलॉजी को नहीं होगा, ये आपको होगा. This belongs to you. Their management, their upgrade, their maintenance, everything related to your server, you would be responsible to manage. Right, sir. ठीक है. हाँ, तो शुरू करें अब आगे हायरार्की. जी भाई Yes, sir. जी भाई ठीक है. Yes, sir.
अंकुर सर एक क्वेश्चन है मेरा बिल्कुल। सर ये क्योंकि मेरा लैपटॉप की कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी लो थी तो मैं इंस्टॉल नहीं कर पाया, बट मेरा क्वेश्चन ये है कि सर अगर ये क्लाउड पे पॉसिबल हो जाएगा, हम इसकी अगर प्रैक्टिस या थोड़ा इंस्टॉल करना चाहें तो? बिल्कुल बना सकते हो, लैब क्लाउड पे बना सकते हो। ठीक है सर, थैंक यू। बी एबल टू क्रिएट इट, क्लाउड पे बना लो, नहीं तो वर्चुअल लैब्स मिलती हैं उसे एक्सेस कर लो, बट बी एट दैट लेवल फर्स्ट, है ना, कि एक दो क्लास ले लो, बनाना चाहते हो तो पहले से ही बना लो, नो वरीज। लेकिन अभी थोड़ा सा जैसे अभी स्टार्टिंग है ना, अभी तो अभी जो इतना कॉन्फिडेंटली वी आर डिस्कसिंग कि ये सर्वर है, डेटाबेस है, तो इवेंचुअली फर्स्ट डे तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनको भी सुना ही नहीं था ये सब कुछ। तो इवेंचुअली यू आर ग्रोइंग, तो थोड़ा सा स्केल रखो, आज की क्लास और लो, देन ट्राई डिजाइनिंग लैब पर्सनल पे या ब्राउजर पे या मतलब एजोर के ऊपर या जहाँ भी बनाना चाहो, राइट। ठीक है। So we will be now starting, we'll be going into the core of this technology now, ठीक है। core का मतलब कि यहाँ पे भी बहुत सारी चीजें add on I could have done, I could have added WSOS, I could have added co-management, I could have added SCP, जो हमारे क्लाउड में रोल्स बनते हैं डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स के, तो क्लाउड में बना सकते हैं। बेसिकली इट्स अ क्लाउड इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी, बट फॉर योर लेवल एंड फॉर योर अंडरस्टैंडिंग वी विल गो स्टेप बाय स्टेप, कि कुछ चैलेंज ना आए अभी। Great, sir. तो चीजें जो हमने डिजाइन कर दी थी, इफ यू वांट टू विजुअलाइज देम, सो यू कैन सी दिस इज योर एक्टिव डायरेक्टरी, ऑथेंटिकेशन इज कैरबरोस, बहुत कैट ऑथेंटिकेशन वो सारा फ्लो हम बात कर चुके हैं। एंड इफ यू वांट टू लुक एट डेटाबेस, so it will be on some different server. This is how your SQL server would look like. See, your SCCM is connecting with the database. And see, this is your database, C underscore PR1. I believe PR1 हमने दिया था अपने system में से. This is your database, right? Here you will be executing things, your querying and all everything. ठीक है, ये आपकी tables वगैरह होंगी, ये views होंगे, इसके अंदर कुछ भी डिजाइनिंग होगी। अभी एक एप्लीकेशन बनाओगे तो उसमें एप्लीकेशन की देखो टेबल बन गई, क्योंकि बनाई है। डिस्कवरी चलाई होगी तो डिस्कवरी की टेबल बन गई है। तो दिस ऑल थिंग विल बी नोइंग लेटर, ये सारी आपकी टेबल्स हैं, ठीक है, डेटाबेस में, ठीक है। Yes, sir. यस भाई। तो धीरे धीरे जानोगे। तो इसको खोलो, ये आपका सोर्स डीबी है, मतलब ये पैचिंग से रिलेटेड डाटा हमारा जो डेटाबेस बना हुआ है। लास्ट टाइम yesterday itself, one of the guy was practicing on my system and I got him installed all these things. These all things got created from the patching side. Okay, assignment status, everything, every detail related it, everything is in database as I said. Okay, the main data. This is how your database will look like. SQL. Closing it now. So now you would like to visualize your SCCM console, MECM technology console. So this is your console. Let me see. Basically, you have 1, 2, 3, 4. Community tab is basically for the reference, where you get all the new good stuff thing. Basically, the new roadmap thing which Microsoft is planning to have, or some kinds of baby articles. You can see your career which can help you in performing any task. Basically, it's useless. You would never go to this tab. So your main major tabs are navigation tabs are administration, monitoring, software library, and asset and compliance. Like we have in Azure and Intune, we have 3 tabs as it's just as distributed. So here we have 4. Okay, asset and compliance, software library, monitoring, administration. So this is how your console looks like. Okay, so we have seen your Yes. SEC, you have seen your database, your share one database. You have seen your Active Directory. You have seen distribution and management point. For the lab purpose मैंने इसी पे बना दिया है, तो आपकी MPDP इसी सर्वर पे दिखेगी। यानी ये जो सर्वर है इस पे SCCM इंस्टॉल किया है। इस सर्वर का अगर नाम देखो क्या है, if I show you the name of this server, जिस पे आपने SCCM इंस्टॉल किया है,
ये है SCCM DC, ठीक है। तो लेट्स व्यू कि जो प्राइमरी बनाई थी प्राइमरी साइट, तो देखते हैं कि प्राइमरी साइट वगैरह कहाँ है। तो गो टू द एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर गो टू योर साइट्स and inside see you can see there is one primary site, नोएडा प्राइमरी साइट। तो इसी कंप्यूटर पे देखो SCCM DC LMN इंटरनेट, ठीक है, Yes, sir. क्योंकि ऐसी सब आपकी प्राइमरी साइट यहीं इंस्टॉल हुई है, ठीक है, यानी Yes. SCCM यहीं जी भाई। install किया। डाउट किसी को इसमें? नहीं No, sir. No. ड्यूरिंग द इंस्टॉलेशन हमने MPDP कहीं और दी होती तो किसी और कंप्यूटर पे होती, वो हमें वो कंप्यूटर या वो सर्वर और बनाने पड़ते, तो वहां पे हम देते उन पे MP या DP का रोल। अपने केस में क्योंकि लैब है ये, तो हमने अपने में ही बना लिया है। ये देखो नीचे सर्वर एंड साइट सिस्टम के रोल पे आओ, देखो एक ही सर्वर है हमारा अभी तक SCCM DC यही वाला, और इसी पे मैं क्लिक करके नीचे जाऊं तो देखो इस पे ये सारे रोल्स अभी आप नहीं जानते हो तो मत देखो। तो इसमें दिखा रहा है डेटाबेस भी यहीं पड़ा है, सर्विस कनेक्शन पॉइंट अभी हम नहीं जानते, देखो मैनेजमेंट पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट यहीं पड़ा है इसी कंप्यूटर पे। अगर कहीं और पड़ा होता तो इस पे MP और DP नहीं दिखता, दूसरे को मैं सेलेक्ट करता तो वहां दिखता मुझे MP, तीसरे को सेलेक्ट करता तो वहां मुझे दिखता है MP DP, ठीक है। जी Right. एज पर द डायग्राम, ऑब्वियसली ये कहीं और होते हैं। एज पर द डायग्राम बेसिकली ये डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट इन के लिए अलग अलग आपको सर्वर्स चाहिए होते हैं मैनेजमेंट के लिए। कूल। Yeah. क्या होते हैं ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं। Here the major thing जी which भाई। you should take away from here is that this is your SCCM server, this is your console where you'll be designing and viewing everything. So in administration, if you go to the site, then here you will be able to see the hierarchy, right? Cool to everyone. जी Yes, sir. हाँ जी। ठीक है, प्रोडक्शन का भी दिखा दूंगा कंसोल लेटर ऑन बाद में कि क्या चीज कहाँ पड़ी है किससे पड़ी है, ठीक है। तो अभी दिखा के खत्म कर दूँ यहीं पे। म्यूट कर लो फोन गाजा पट्टी। कोई लॉबी में तो नहीं है? I hope I have accepted everything. Not reading this text. Alright. तो मैं प्रोडक्शन का इंफ्रा दिखाऊं, तो प्रोडक्शन का इंफ्रा ऐसा जैसे है, तो देखो यू विल बी एबल टू सी कैश, मैंने कहा था ना कैश होता है, प्राइमरी होती है, बता था ना, मैनेजमेंट पॉइंट, डिस्ट्रीब्यूशन Yes, sir. पॉइंट। If you go it, you see I prepared a slide where like in the production infra I mentioned it here. In Paris we have primary site C,
यहाँ वाला कॉलम देखो, ये जो साइड में ऊपर देख रहे हो, देखो इस पे ये है जिस पे टिक मार्क है, वहाँ पे वो रोल्स इंस्टॉल है। जैसे पेरिस में जो है कैश लगी हुई है, तो देखो यहाँ पे सेंट्रल सर्वर लगा हुआ है, ठीक है। फिर एशिया पैसिफिक, एशिया कैश की प्राइम, मींस मेमोरी। अभी बताऊंगा, नहीं साइट होती है, साइट है, सर्वर का नाम है, देखो मैं ये दिखा रहा हूँ, ठीक है। देखो जैसे मैनेजमेंट पॉइंट, डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट दिखाता हूँ अभी। डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट का ये कॉलम है, राइट, एमपी का, ये देखो डीपी दिख रही है, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट, और देखो ऊपर मैनेजमेंट पॉइंट। तो डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट देखो किस पे है, देखो इस पे डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट है, इस पे है, इस पे है, इस पे, और ये अलग अलग रीजन्स में, देखो नॉर्थ अमेरिका, फ्रैंकफर्ट, है ना, यहाँ पे अलग अलग है ना, देखा। ये डेवलपमेंट एनवायरनमेंट को छोड़ दो, ये ऊपर वाला प्रोडक्शन, ये देखो रोल वाइज वी हैव सर्वर्स ओवर देयर, ठीक है। समझ में आएगा थोड़ी देर में। तो लेट मी लॉग इन। क्या हुआ? सर्वर पे आ गया मैं, कहाँ हूँ मैं? गलत पे आ गया क्या? अंकुर जी, हम लोग ये अलायंस के वीडियो में लॉगिन है कि अभी मतलब डजंट मैटर किसके वीडियो में क्या है, कहाँ है। द मैटर इज आई एम हियर टू शो यू द इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना। वो किसी अलग अलग प्रोजेक्ट के अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, वो किसी का भी इंफ्रास्ट्रक्चर हो। कनेक्टिंग टू सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन सर्वर, प्रोफाइल यूनिटी कॉपी। सो ये लाइक प्रोडक्शन इन्फो सेम, देखो प्रोडक्शन में यहाँ है, तो ये देखने का मतलब एडमिनिस्ट्रेशन में जाओ, एडमिनिस्ट्रेशन में गो टू, कहाँ गए थे, साइट्स में, राइट। अब देखो साइट्स पे क्लिक्ड, you would be able to see, like, see how many sites they have. See, they have primary, they do not have a secondary site. We'll be discussing that. देखो primary site type wise में इसको कर देता हूँ, तो see these are all primary site in different location। यानी जो आपने अभी एक SCCM सर्वर बनाया है, ऐसे कई सारे सर्वर्स बने हुए हैं, ठीक है, अलग अलग रीजन के लिए। बेसिकली AP1, AP2, AP3 इज फॉर एशिया, इसमें आपका सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया और इंडिया और ये सब कुछ कवर होता है, इंडोनेशिया, जापान, ठीक है, सिडनी, ठीक है। उसके बाद नॉर्थ अमेरिका में आपकी वो सारी कंट्रीज, कनाडा और यूएस की कंट्रीज, वो सारी इसमें आ जाती हैं। फिर ये फ्रैंकफर्ट वाले में आपकी यूरोपियन कंट्रीज पूरी आ जाती है, ठीक है, पोलैंड जितनी भी हैं, ठीक, इंग्लैंड, ठीक है। यूके की कंट्री हो गई, यूरोप की, जर्मनी सब कुछ इसके अंदर आ रही है। तो बेसिकली यहाँ पे स्ट्रक्चर ये है, आई एम नॉट शोइंग यू ये यहाँ पे ऐसा होता है, आई एम जस्ट शोइंग यू कि प्रोडक्शन में दिस ऑल सर्वर्स वी मेंटेन, वी क्रिएट एवरीवेयर इन ऑर्डर टू डू द मैनेजमेंट। जैसे मैंने एग्जांपल बताया था कि फेसबुक होगा या कुछ होगा, तो ऐसा नहीं है कि उसके एक ही सर्वर होगा, तो इंडिया के लिए अलग बना रखा होगा, नॉर्थ इंडिया को सकता है और बना रखे हो, तो फॉर द लोड बैलेंसिंग एंड रिक्वेस्ट एक्नॉलेजमेंट, क्योंकि एक पे एक बना के मैनेज करेंगे तो क्रैश हो जाएगा। जितनी बड़ी कंपनी, जितनी बड़ी हायरार्की, उतने ज्यादा सर्वर्स,
जितने ज्यादा कस्टमर्स आएंगे तो क्लाइंट रोल है। हाँ, आई वाज सेइंग एमपी एंड डीपी, गो एंड साइट एंड सिस्टम रोल्स, सेलेक्ट एनीवन, आई एम सेलेक्टिंग दिस, से दिस प्राइमरी, सॉरी दिस SE1 साइट। तो इस पे देखो सिर्फ डीपी का रोल है और कुछ नहीं दिख रहा, देखा? जी तो दिस इज Yes, भाई। अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ इसको, तो देखो इस पे इतने सारे रोल्स, यूपी भी है, एमपी दोनों पड़े हुए हैं, ठीक है। साइट सिस्टम और डेटाबेस भी आपका यहीं पड़ा हुआ है, साइट डेटाबेस है, देखा? तो मैं इस तरीके से कैश पे आऊँ, तो कैश पे देखो यहाँ पे यू विल नॉट गेट एमपी और डीपी रोल, नहीं है। कैश इज मेनली फॉर रिपोर्टिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन पर्पसेस। So this is how you can view what is the hierarchy. Cool. ज्यादा डिजाइनिंग में देखनी है तो यहाँ पे आओ, मॉनिटरिंग और आपका साइट हायरार्की। तो दिस इज हाउ इट विल ऑल बी, ठीक है। कैश है और ये सारी प्राइमरी है, उसके नीचे और देखेंगी ज्यादा एक्सेलरेटेड करोगे कि एमपी डीपी और सेकेंडरी और सारे सर्वर सब देखेंगे। कूल। जी भाई। Yes, भाई। हाँ जी। So I prepared very good document and runbooks for this project during the transitioning. So and all everything, the task sequences, structuring the task sequences, designing. So this is just for the brief. एक दिन का था ये, तो एक दिन के topics में I was studying for the important infrastructure. So here, what was required? What the main purpose of showing you all this, that you should be able to relate the real infrastructure along with the lab infrastructure which you have created. Obviously, if you'll ask me to log into the AD there, I do have access. It is because like I have access because I not just limited to one technology, but the people from MECM will have only have access to their MECM servers, whatever servers they have. Cool. जो उनके रोल्स हैं और सर्वर्स हैं जितने भी हैं 100 150 200 जितने भी सर्वर उनके खुद की will have access, not on the database. Clear? जी भाई। Yes, भाई। Yes, sir. बस स्ट्रक्चर में प्राइमरी साइट तो होनी ही चाहिए। अब मुझे बताओ इतनी